So we were talking about friction, right, in the last class, and so what I will do today is I will give you a question first, and let's see if we can do this question. Chalo, quickly then, let's try this question. And this question, the answer is not obvious. Okay, so don't think इसका आंसर MG. एरो कहाँ मैंने बनाया है? ये ऐसा एरो तेरे को ऐसा कोई तीर मिलेगा तेरे को? अभी मैंने बोला ना जो है कि आंसर MG नहीं है. MG आंसर नहीं है.
Chalo, I'll give you. The hint is that I'm asking for the minimum force, right? Minimum force. So assume, please do not assume that the force is straight. Why should you assume that? Assume that the force is acting at some angle theta. चलो अब करो. Yes, 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 yes. When force is minimum, the friction should still be maximum. Yes, because we are saying that we are asking for the force required to move the block. The block will only move when the friction is maximum. So now you are, yes, so now you are getting near the answer, but still you are not at the answer. Okay, मेरा डायग्राम कहाँ है? देखो M G M F theta
have n plus f sin theta is equal to mg f cos theta into mu n. तो यहाँ से आएगा f cos theta is equal to mu mg minus f sin theta f will be equal to mu mg upon. So you must be clear in your mind that हाँ तो अभी आंसर निकाला नहीं है मैंने. You must be clear in your mind that हम कर क्या रहे हैं. ठीक है ना. जैसे अभी प्रसन्ना कंफ्यूज्ड है कि मैंने फोर्स एट एन एंगल क्यों ले लिया भाई. मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक. प्रसन्ना क्या इसमें मैंने मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है. आपको ये वर्ड हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है यहाँ पे. कैन यू सी द वर्ड हॉरिजॉन्टल. cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा. क्या बोल रही है. जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना ये. So you must be absolutely clear what have we found. There should be no confusion at all about what you are working out and what you have to work out. Okay? अभी रिजल्ट ही नहीं निकाला है इसमें. अभी कोई कुछ टाइप नहीं करेगा, मुझे बोलने दो. You must be clear about what you have to work out and what you have worked out. What have I worked out? ये क्या चीज है. What is this? ये क्या चीज मैंने वर्कआउट किया है. हाँ भाई अभिन आंसर दिया था ना आपने. ये व्हाट इज दिस. व्हाट इज दिस. ये नॉर्मल है. क्या बोल रहा है वेदांत. में एफ की वैल्यू लिखी हुई है, नॉर्मल बोल रहा है. नहीं राधिका गलत. नहीं गलत 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 गलत. एवरीबॉडी इज रॉन्ग. नहीं एम ए हो ही नहीं सकता. ए कहाँ से आ गया. हाँ. This quantity is the force required to just move the block if angle of force theta with the horizontal. मिनिमम कहाँ है. ये कहाँ से आ गया कि मिनिमम. हाँ अब सही बात बोली अथर्व तुमने. मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं बोलते रहूंगा. शायद आप एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो कि जहाँ पे भी फिजिक्स में वर्ड मिनिमम या मैक्सिमम आ जाए वहां पे ईश्वर. जहाँ पे फिजिक्स में वर्ड मैक्सिमम या मिनिमम आ जाए
यहाँ पे be sure that differentiation is going to play a role. Maxima and minima, right? Maxima and minima. तो यहाँ पे variable क्या है? What is the variable that I have chosen? So since I have found the force required to just move the block, if the force is at an angle theta with the horizontal, तो ये तो फोर्स ऐसे भी लगाई जा सकती है, ऐसे भी लगाई जा सकती है, ऐसे भी लगाई जा, सीधा भी लग सकती है, थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ऐसे भी लगाया जा सकता है, ऐसे भी लगाया जा सकता है। और मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई कितनी फोर्स मैं लगाऊं कि मिनिमम फोर्स मैं लगाऊं कि मैं इस ब्लॉक को मूव करूं। As we discussed, I think in the preceding lectures, that when you apply a force like this, what you are doing is, Havedan, very good. What you are doing is that you are reducing the value of normal reaction. At the same time, you are reducing the value of the horizontal force that you are applying. So there must be some balance somewhere. That म्यू एन की वैल्यू कम हो गई है और आपके हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है फोर्स का जो आपने अप्लाई किया है, दैट इज जस्ट इनफ टू मूव द ब्लॉक एट दिस वैल्यू ऑफ एन। तो इन एनी केस इतना दिमाग ही नहीं लगाना है, मिनिमम वर्ड आ गया, मैक्सिमम वर्ड आ गया, बी assured that in physics you are going to end up with calculus, right? You are going to differentiate, you're going to put it equal to 0. If you are lucky, then you may get away with some previous result of maxima and minima. Okay? If you are lucky, you may get away with some previous result of maxima and minima. Now, if I want this guy to be minimum and this guy is a fraction, right? Where this is the numerator, याद है ना सबको, न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर. So if this is a fraction and you want this fraction to be minimum, what is the criteria for a fraction to be minimum? Very good, yes. Yes. So the criteria must be that denominator should be maximum. Right? And have you ever come across this expression in mathematics? Cos theta plus, a cos theta plus b sin theta. इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? अगर आपको याद हो तो बहुत दिन पहले ऐसे ही स्क्रीन पे मैंने बोला था कि हम बाद में यूज करेंगे. इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दिस. If you do not remember, then all you have to do is differentiate with respect to theta and put it equal to 0, right? In fact, let me do it here. So d by d theta of a cos theta plus b sin theta is equal to 0. And what this means is that minus a sin theta plus b cos theta is equal to 0. And this means that tan theta is equal to b upon. And if tan theta is equal to b upon a, then this means that sin theta will be equal to how much? Tan theta is equal to b upon a. Remember, then b और a जो है वो adjacent and opposite sides हो गए, तो sin theta will be equal to b will be equal to b upon root a square plus b square, and cos theta will be equal to a upon root a square plus b square. Put these values back into sin theta and cos theta here.
and you get root of a square plus b square. So this means I'm going to change the slide. Please take a screenshot if you have not. I'm going to change the slide. I'm going to go to the next slide. So f, if the value of f force is mu mg divided by cosine theta plus mu sine theta, then surely minimum value of force must be mu mg on root 1 plus mu square. Now, I hate to say this, but some things, although you will not remember, but still I have to say from my end, please remember. And I'll tell you the reason why you need to remember this. Number one, it is very obvious that you have not seen this before. Okay. So when you are doing questions in HCV, I hope you start doing HCV. Yesterday somebody was asking me also. Please be absolutely clear about this. सबसे पहले HCV करना है. उसके बाद से जो बुकलेट दिया है या जो ट्यूटोरियल आपको पीडीएफ दिया है वो करना है. Okay? So why do you have to remember this? The first thing is that obviously this is something new you have learned. You did not know this before today, before now. And the more important reason why you have to remember is that when I come to the chapter of electrostatics, okay, then I am going to say that this is something having a charge Q. Okay, and I am going to say कि यहाँ पे तो कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने लग जाए. मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए कि ये ब्लॉक जस्ट मूव करने लग जाए. राइट, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई विल आस्क. At that point of time, you are not really going to do all this derivation just to find the minimum value of force that you are going to that is required to move the block. Right, this should be at your fingertips. अगर ये याद रहेगा तो आपको केवल अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे. अच्छा, फोर्स कितनी होती है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस मिनिमम फोर्स. If you remember in class 10, if you remember in class 10, आपको पढ़ाया जाता था कि that current carrying wires experience a magnetic force. Okay? So that was just theory that you were taught, right? And here we are actually going to learn how much force a magnetic field actually applies on a current carrying wire. And I am going to ask this question. ये question आपके सामने आएगा, I think HCV में ही आ जाएगा कि एक करंट कैरिंग वायर है, इस ब्लॉक के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, मिनिमम कितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए कि ये मूव करने लगे. राइट, सो प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट. द वे दैट आई लाइक टू रिमेंबर इट, हाँ, एफ मैक्स और एफ में निकाला था हमने. हाँ, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है. द वे आई लाइक टू रिमेंबर इट इज दैट म्यू एम जी आंसर नहीं है इसका. Minimum force required to move a block, the answer is not mu mg. क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आंसर आता है ना कि भाई mu mg होना चाहिए. It is not mu mg, but it is mu mg divided by 1 plus mu square. I can also ask another question. I can also ask at what angle should this force be applied? I can also ask this question. हाँ बिल्कुल, yes, फोर्स की डायरेक्शन. नहीं, फोर्स की डायरेक्शन भी फिक्स्ड है राधे. देखो, that is what I am asking actually. At what angle should this force be applied? At what angle should this force be applied? Here is the answer. Here answer.
नहीं, Radhika, you are missing out. I have arrived from this to this by differentiation d by d theta of f is equal to 0. And when I put d by d theta of f is equal to 0, the result that I get will be tan theta is equal to mu. Right? So this is telling me that f uh, f is minimum if the angle of application is this, right? थीटा वेरिएबल है ना, फोर्स में थीटा वेरिएबल है ना, मेरी ताकत तो लिमिटेड है, मेरी ताकत जो मैं ताकत लगा सकता हूँ वो लिमिटेड है, एंगल किसी भी एंगल पे मैं फोर्स लगा सकता हूँ। तो जब मैंने इस पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स लगाया तो जो मुझे ताकत लगानी पड़ रही है इस ब्लॉक को मूव करने के लिए वो मिनिमम है, राइट? So just because we used this result, does not mean that we did not carry out the differentiation. In fact, it is precisely for this reason that I wrote all this. Okay. Next question. इससे भी hard नहीं है. Next question. सुपरमैन का वेट मुझे नहीं मालूम. Velocity will be speed of light. Wow.
अच्छा, ये तो सुपर। पहले तो उड़ नहीं रहा है, दौड़ रहा है। हाँ राधिका, गुड, यस। हाँ, गुड, सब लोग। हाँ, सही आंसर निकलेगा। वेरी गुड। Okay, so before I answer this question, please listen to me. Please listen to what I'm saying. Please pay attention. Put your pens down. So I have talked about case one, case one, scenario two, and we finally arrive at case one, and we are talking now about scenario three. So what are the features here? Well, one surface is fixed. Okay, that is the feature. One surface is fixed. उसके बाद motion is occurring. Right, so you can see that there is motion. But the weirdest factor is that the value of F applied is equal to 0. So up till now, what we had seen was really an extension of what you had done in class 10, in the sense that up till now, friction was indeed opposite to motion. But now I want to introduce this new scenario, this new case when things will become topsy-turvy, right? I mean, they will go upside down, in the sense that whatever you have learned or whatever you have seen previously will not work anymore. So let's talk about somebody who is running. Okay? Let's talk about somebody, not Superman,
But somebody who is running a 100-meter race, if I were to draw a free body diagram of a person running a 100-meter race, then I would find that due to Earth there is mg, and due to the surface there is the normal reaction n. But when I see this person running this 100-meter race, I observe that this person starts from zero velocity and goes up to a certain velocity. That means that I observe acceleration. I observe a definite change in the velocity of the person. And this acceleration is horizontal. This acceleration is horizontal. Now, neither mg, which is vertically downwards, nor normal reaction, which is vertically upwards, can cause this acceleration. Therefore, I am left only with one alternative. However improbable it may sound to your ears, and however weird it may sound to your ears, but it is the truth. If I observe an horizontal acceleration and I observe no horizontal forces, and I know that friction must be there, then the only conclusion that I can draw is that this acceleration must be due to friction. Now, I don't know how many of you have taken part in athletics. I hope you have at least seen uh, athletics from close quarters in school. And if you have noticed, or those of you who have not noticed also, the sprinters, they wear special shoes. Yeah, they don't just wear sneakers. The sprinters, they wear very, very special shoes, right? The shoes that they wear has spikes at the bottom, right? So if friction is something that is ultimately going to oppose your motion, why wear spikes? Because spikes will drastically increase friction, right? And the reason is that friction really not only uh, not only opposes motion, it does oppose motion somewhere. If you kick your chair right now, then the chair will eventually travel some distance and stop. So this motion of the chair has been opposed by friction. But it turns out that friction also enables motion. In fact, almost all the motion that you observe in your daily life is enabled by friction. So, for example, मैं तो box बना दिया है. This box can be a car, right? So you see a car, the driver starts the car, the driver puts the car in gear, driver pushes the accelerator pedal, and the car accelerates. What is the force which is responsible for this? Well, if you draw the free body diagram of the car, then you will find that there is mg. Mg cannot be responsible for the horizontal acceleration. There is the normal reaction. Normal reaction cannot be responsible for the horizontal acceleration. The objects in the surrounding of the car are only the surface and the earth. There is no third object, so there can be no other force. There can be only three possibilities, that is mg and n friction. Mg and n are incapable of producing a horizontal acceleration. Therefore, the acceleration must have been produced by friction. Okay? So when you see a car accelerating, it is friction which is applying this force which is causing the acceleration. When you walk, when you run, when you accelerate, then it is friction which is causing the acceleration. Okay, now I think this statement covers it all, but unfortunately, layman's terms, layman's
Language is still within us, so I will have to add another statement now, and that is that when the brakes are applied, the car deaccelerates, and it is friction which is responsible for this deacceleration as well. Okay, so when you start walking, it is friction which is responsible for your acceleration, and when you stop walking, it is friction which is responsible for your deacceleration. So friction for a car or for a person may be in the direction of motion, and it may be opposite to the direction of motion. Later on in the next chapter, I will show you that friction may be perpendicular to the direction of motion. In fact, friction may have any angle with respect to the direction of motion, but that will come later. First, I want you to digest the fact that friction is responsible for motion as you see it in your daily lives. Okay, so friction is responsible not only for the opposition of motion, but it is also responsible for the initiation of motion. आप अभी उठ के चलना शुरू करोगे तो फ्रिक्शन की वजह से आप चल रहे हो, राइट? एंड ऑफ कोर्स दिस शुड बी द केस, अदरवाइज आप जो जूते पहनते हो, जो स्नीकर्स पहनते हो आप, उसका नीचे वाला सरफेस में इतनी ट्रेडिंग क्यों होती है, इतना रफ क्यों होता है नीचे का सरफेस? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फ्रिक्शन हेल्प्स यू मूव. अगर ऐसा नहीं होता तो कार के टायर्स हो गए या आपके स्नीकर्स के सोल हो गए, ये सबको बिल्कुल स्मूथ बना दिया जाता. What would happen if you are on a slippery surface? Why is a surface slippery in the first place? A surface is slippery in the first place because of the fact that the coefficient of friction is less, right? But if friction opposes motion, then this should be a good thing because opposition to motion is being reduced, right? But this is not really true. Friction helps motion and opposes motion, right? Depends on what is happening. So, what happens if you are in case 1, scenario 3, when you see that one surface is fixed? Okay, Superman is running a 100-meter race. So, Superman is moving on the ground, surface is fixed, motion is occurring, obviously Superman is moving, and F applied is 0. There is no F applied. Superman is applying there is no external extra force. When I draw the free body diagram, in the absence of friction, there is no other horizontal force applied on Superman. Why have I chosen Superman? So you see that this F, I have written F, right? The value of this F can vary between 0 and mu n. Generally, you cannot, it is very difficult to have a friction value of mu n. If you do reach a friction value of mu n, that means you are just about to slip. So that's not very good news. So why have I chosen Superman? Well, the reason is that when you move, okay, I'm telling you that friction is responsible for making you move, but to generate this friction, okay, it is your muscles which do the work. I should not actually, well, I can actually use this term work. We'll discuss it in the next chapter. So what is happening is that you are applying, your muscles are applying a force on the surface in the backward direction, right? So your muscles push the ground backwards, and therefore the ground pushes you forward. Yes, action, reaction. When you walk, when you run, you push the ground forward. You push the ground backward, and the ground pushes you forward, right? But we don't like to think of it like this. We just like to draw the FBD and draw the forces,
And when we draw the forces, then this force comes out to be the friction force. So the reason why I have chosen Superman is that Superman, by definition, has got infinite strength, and therefore Superman will be able to make the friction value equal to mu n. So, so for Superman, F is equal to mu n. So this friction, remember, is responsible for the acceleration. So mu n must be equal to ma. But n is equal to mg because vertical acceleration सुपरमैन का नहीं है या किसी आदमी का नहीं होता है. So mu mg is equal to ma. M cancels out and a maximum is equal to mg. Right? So it turns out that the maximum acceleration that you can have on the ground is equal to mu g. More mu you have, more scope of acceleration you have. Okay? That is why they tread the tires of the car. The reason is that they want to increase mu so that the maximum acceleration available is more. It is, however, only Superman that can move with this constant maximum acceleration. Generally, we end up moving with an acceleration which is lower than this maximum acceleration. So, if Superman moves with this maximum acceleration, A max will be equal to 9 meter per second square, right? Because mu ka value 0.9. S is equal to 100. We are assuming that since Superman is Superman, he will not cheat. So u is equal to 0 meters per second, and therefore we just apply S is equal to ut plus half at square, and we get t is equal to under root of 200 by 9, which comes out to be around something like 3 seconds, 3 point something. Okay, so case 1, scenario 3, we are going to see more of it when we study circular motion. But case 1, scenario 3 is when you see that F applied is 0. If F applied is 0, then be assured that whatever acceleration you see will be caused by friction. Friction will be responsible for this acceleration. Okay, right? पूरा टाइम कहाँ उत्कर्ष क्या बोल रहा है? तू दौड़ेगा तो दौड़ता ही रहेगा क्या? रुकेगा नहीं कभी. हाँ, कार आगे बढ़ती है तो कभी रुकती नहीं है, एक्सेलरेट करती रहती है कार हमेशा. So when the car accelerates, it is friction which is making it accelerate. Therefore, friction is in the direction of the whole reason why there is confusion is that you do not understand, or at least you do not, you do not fully comprehend, or you cannot grasp the concept of acceleration. एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ जाओगे तो फिर उसके बाद से कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल रोड, इस हॉरिजॉन्टल रोड पे ये कार है और ये वही कार है कुछ समय बाद. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कार की थी 0, यहाँ पे इस कार की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड. तो इसका जो एक्सेलरेशन हुआ है वो इस डायरेक्शन में है, इसलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी होगी वो इस डायरेक्शन में. कुछ देर बाद मुझे एक कार दिखाई देती है, ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और उसके कुछ देर बाद मुझे दिखाई देता है कि ये 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. तो अब जो एक्सेलरेशन हुआ है वो ऐसा हुआ है.
और इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो भी ऐसा, right? So what happens is generally you end up with visualizing only this picture. I don't know, for some weird reason. This is what you visualize. This is what you forget. So please try to remember that if F applied is 0, you don't see any other force acting on it. Then whatever is the acceleration, that must be caused due to friction. ठीक है ना, इसीलिए मैंने बोला मेरे को लेमैन्स टर्म्स भी यूज करना पड़ेगा. एक्सेलरेशन है तो फ्रिक्शन की वही डायरेक्शन होगी. ये एक्चुअली स्टेटमेंट कंप्लीट है फिजिक्स के हिसाब से, लेकिन अगर लेमैन टर्म्स के उसमें आ जाए तो एक्सेलरेशन होएगा तो फ्रिक्शन की वजह से होएगा, डीएक्सेलरेशन होएगा तो फ्रिक्शन की वजह से होएगा. मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है ना. बट आई शुड नॉट रियली नाउ एट दिस स्टेज बी स्पीकिंग लाइक दिस विथ यू. एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का कोई भी चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जर्व हो रहा है, right, you are observing a particular change in velocity of an object, then if F applied is 0, then it means that this change in velocity must be caused due to friction. Now if the direction of this change in velocity is forward, then friction is forward. If the direction of this change in velocity is backward, then friction must be backward. Okay, okay. We end up confusing friction with resistive forces, right? And resistive forces are something which are slightly different from friction, although they are called friction only, right? वहाँ पे भी I think we discussed in the last class, right? जब एरोप्लेन से हम जाते हैं, नहीं, आई डोंट थिंक आई डिस्कस दिस. जब हम एरोप्लेन से कोई नॉर्थ इंडिया अगर कोई गया हो एरोप्लेन से, तो व्हेन यू आर गोइंग टू नॉर्थ इंडिया, राइट, द टाइम टेकन इज स्लाइटली लेस as compared to when you are coming back. Why? What is the reason? Well, the reason is that when you are going to North India, generally the wind is in the direction. That means wind flows from this part of India to North India. उसको अगर एविएशन लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको बोलते हैं टेल विंड बोला जाता है. So the air flowing in that direction is actually helping your aircraft move faster. But of course, when you are coming back, then there is a problem. This in aviation is called headwinds. So when you are coming back, the air is moving in the opposite direction, so you have resistance to motion, and therefore it takes a slightly longer time. Okay? So please remember that friction is not number one, a static concept. It is a very, very dynamic concept, right? And because of this dynamism, because of the fact that this dynamism was not revealed to you previously, please remember that friction can have various magnitudes and can have various directions, right? Difference is about 15-20 minutes, sometimes even more. So the tailwinds and the headwinds really help the aircraft. Even if they are helping increase the velocity by, let's say, 20 kilometers per hour, and while coming back decrease the velocity by 20 kilometers per hour, then your average speed is actually going down by 40 kilometers per hour while coming back, right? So difference काफी ज़्यादा आ जाएगा. Okay, so this was case 1, scenario 3, right? Okay. बोलो अभिन. सर ये अभी भी नहीं समझ आ रहा कि सर फ्रिक्शन मतलब साथ में कैसे लग रहा है जिस तरफ एक्सेलरेशन है. फ्रिक्शन किधर लग रहा है बता फिर.
मतलब सर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन तो हम जैसे कि सर हमने कोई ब्लॉक स्लाइड होता हुआ भी देखा है, तो उसमें भी तो पीछे ही लग रहा था। ब्लॉक अगर स्लाइड हो रहा है तो ब्लॉक की वेलोसिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? सर वो डिपेंड करता है ना, मतलब हम कौन सा किस फोर्स चीज पे दूसरी डिपेंड तरफ से करता लगा रहे हैं। है? हाँ, अरे तूने दूसरी तरफ से एक कौन सा ब्लॉक को फोर्स तूने लगा एक रहे हैं। लात मारी, वो स्लाइड कर रहा है, वो क्या होएगा? रुकेगा या चलता रहेगा? सर अगर फ्रिक्शन है तो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। अरे भाई मेरे, फ्रिक्शन तो है ही है ना। रुक जाएगा या चलता रहेगा? हाँ सर रुक जाएगा फिर थोड़ी देर बाद। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। मानता है मेरी बात? हाँ इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका ये होना चाहिए। सर। होना चाहिए कि नहीं? सर मूव तो इस तरफ हुआ तो एक्सेलरेशन भी उस तरफ होगा था। मतलब मैंने तेरे को जितनी काइनेमेटिक्स पढ़ाई है सब पे तूने पानी फेर दिया, पोछा लगा दिया। मजा आया पोछा लगाने में? अबे, ए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मालूम है? याद है? हाँ हाँ सर। ये गलत है, सही लिखा है मैंने? सर सही है। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर, यही बोल रहा है ये स्टेटमेंट? हाँ ये जो वेक्टर है u, ये ये होना चाहिए। हाँ ये जो वेक्टर है v, ये होना चाहिए। हाँ v का मैग्नीट्यूड बड़ा है कि u का मैग्नीट्यूड बड़ा है? सर यू का। अगर u का मैग्नीट्यूड बड़ा है, v का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो a वेक्टर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ हाँ नेगेटिव सर होना चाहिए? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब क्या होता है? डायरेक्शन रिवर्स। तो a इधर होएगा, हाँ सर। फोर्स भी तो इधर ही लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स। हाँ हाँ अच्छा हाँ सर। फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी। हाँ हाँ सर थोड़ा क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से गाड़ी आगे बढ़ रही है, उसको देख लो। जिधर जिधर एक्सीलरेशन है उधर फ्रिक्शन है। अब तो बोले ओके कि सर नहीं समझ नहीं गया। नहीं, मेरे को तो 10th में पढ़ाया गया था। मैं एक मैं मतलब एक टीचर का डेमो ले रहा था, डेमो लेक्चर, एंड शी वाज ए पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग। मैंने पूछा, मैडम कार, गाड़ी गाड़ी सड़क पे चल रही है, फ्रिक्शन किधर होना चाहिए? तो मैडम ने बोला, सर बैकवर्ड होना चाहिए, बैकवर्ड। सो शी वाज फ्रॉम ए रीजन वेयर हर एक्सेंट वाज लाइक दैट। मैंने बोला अच्छा ठीक है, और गाड़ी एक्सेलरेट आगे कर रही है तो तब किधर फ्रिक्शन होना चाहिए? तो सर बैकवर्ड होना चाहिए। फ्रिक्शन अगर बैकवर्ड हो जाएगा तो गाड़ी फिर आगे क्यों जा रही है भाई? कौन कौन उसको पुश कर रहा है? गाड़ी चलाने के लिए हम फ्लिंटस्टोन्स की तरह नहीं काम करते हैं ना। फ्लिंटस्टोन देखा है किसी ने? देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा है? देखा है, उत्कर्ष ने देखा है। कैसे गाड़ी चलाते हैं उत्कर्ष उसमें? गाड़ी कैसे चलाते हैं? आ गया ना समझ में अभिन तेरे को? हाँ सर समझ गया। थोड़ा सा डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम आई एम गोइंग एब्सोल्युटली opposite to what you have been taught. बट जो सही बात है वो सही बात है। आई मीन आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, जहाँ पे हम शेक्सपियर के इंटरप्रिटेशन के ऊपर बहस कर सकते हैं। ये जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओनली टू द स्मॉलर, जहाँ एरो बनाया वहीं फोर्स लगी है। हाँ, सेकंड में जो 10 kg ब्लॉक है उसके नीचे फ्रिक्शन नहीं। दोनों एक साथ करो। नहीं भाई, नहीं। हाँ प्रसन्ना जी, 10 ही रहता है ना। ब्लॉक 2 पे लग रहा है ना, ये फ्रिक्शन लगेगा ना। फ्रिक्शन इज एक्शन रिएक्शन होएगा ना। अगर 10 kg वाला ब्लॉक 2 kg पे फ्रिक्शन लगाएगा तो 2 kg वाला ब्लॉक 10 kg पे फ्रिक्शन लगाएगा। नहीं नहीं नहीं। So what is happening here? What is happening here? So all your answers are wrong. Okay? And the reason is that मैंने थोड़ी सी बदमाशी करी है. The reason is that this is case 2. Both surfaces are movable. है?
So look at this surface, look at this surface, look at this surface, and look at this surface, right? So out of these four surfaces which are interacting with each other, which are touching each other, uh, the the surface of 10 kg block, this is movable. The surface of the floor is fixed. Upper surface of the 10 kg block is movable, and the lower surface of the 2 kg block is movable. So the rules of friction here and the rules of friction here are different. The rules of friction here are what we have learned, and the rules of friction here are completely different from what we have done. And therefore, your answers are wrong because you are applying rules, you are applying concepts uh, which are for case one, where one surface is stationary, where one surface is fixed, right? Okay. So this is going to be case two. This is uh, this is the last case of friction. Okay, इसके आगे कुछ नहीं है. This is the last part of friction basically. So I've discussed with you case one and three scenarios. This should be sufficient to solve. Uh, this should be sufficient to solve around 80% of the problems from HCV. The remaining 20% of the problems will be that of case two, right? And this is what I will discuss then in the next class. Try to solve it yourself by tomorrow, I think, like day after tomorrow. Try to solve it yourself if you can. बहुत ही अच्छी बात है. And if you cannot, don't worry because we'll discuss case two in the next class. And you will see that the rules here are completely and absolutely different. So the fact that some of you correctly, of course, I think, कि हाँ भाई ये फोर्स 10 न्यूटन है, यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, राइट? यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन है यहाँ पे, और ये फोर्स 10 न्यूटन है. तो आपने बोला अच्छा फ्रिक्शन तो यहाँ पे पीछे 10 न्यूटन लग जाएगा, तो इसके ऊपर जीरो फोर्स हो गई, इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया. लेकिन ऐसा होगा नहीं. दिस विल नॉट हैपन, राइट? एंड आई थिंक यू कैन फिगर दिस आउट एज वेल, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन तो है नहीं. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़े हैं और हमारे ऊपर किसी ने फोर्स लगाया और हम मूव ही नहीं कर रहे हैं, राइट? सो समथिंग वियर्ड इज गोइंग ऑन हियर, समथिंग completely different is going on here, which we'll discuss in the next class. Right? Okay, so I'll see you day after tomorrow. Please start with HCV friction, right? Newton's laws of motion and friction is the same. नहीं, आंसर सब गलत है बिल्कुल. -5 कहाँ हो जाए? आगे फोर्स लगाएगा तो वो पीछे जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा बताना मेरे को. Right? You can imagine this to be नहीं, जीरो नहीं है सर. नहीं करना आराम से करेंगे. लंबा है ये. This is not a very small question. Undefined कैसे हो जाएगा? क्या हो गया है? So we'll do this. We'll do this in the next class. ठीक है. इनफैक्ट इससे पहले एक और चीज करनी थी, मैं भूल गया. मैं I will discuss. एक चीज बची हुई है उसमें. I forgot. First I'll discuss that, then I'll discuss this. Okay, in the next class. Chalo. Okay. I'll see you guys day after tomorrow. हाँ.
We'll do that. Yeah. Chal, bye bye.